So we had started with the dividend decision and its impact on the valuation of firm. And under that, we again have two contrasting views. One is a set of theories that says that dividend decisions are relevant to the firm and they have an impact on the valuation of the firm. And on the other extreme, we have dividend irrelevance theories. We have started with the relevance approach, and under that, in the last class, we discussed the Walters model. Now, I will just quickly give you a brief recap of the Walter model and then we proceed with the practical on the same. Now, firms they try to pay dividends in the market because firms which are in a regular stream of paying dividends or firms which are having a regular stream of dividends, they are perceived to be more positive by the investors. Now, the investors they prefer firms which are declaring and distributing dividends, and then again, dividend can be of two types. One is a cash dividend, and the other is a stock dividend. Stock dividend would be a bonus share given by the company to the existing shareholders. So, the dividend relevance approach it says that the dividends they reduce the uncertainty of the investor. Uncertainty of the investor means that the investor is not waiting in the long run, that once the capital appreciation of the share takes place, then they are making some profit. They're not waiting for that exactly, but regular dividend payment by the company assures the shareholder of the viability and the future profitability of his holding. Now, investors they discount the firm earnings at a lower rate if they are being paid regular dividends. I repeat myself, say when the investor is calculating the value of a firm, then value of a firm, or in simple terms, we say when the investor is calculating the intrinsic value of the shareholding at point zero. So, intrinsic value is what is deemed to be the fair value, true value of the share. Now, they discount the future expected cash flows. फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज क्या होंगे? एक शेयर के लिए फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज होते हैं dividends that are being paid, and finally the sale price, future expected sale price of the share. Now, when a shareholder, now these are all basics, but let's revise them. A shareholder expects, I think I went on mute. What was the last point I was telling you people? No, ma'am, your voice was okay. Okay, so I hope I didn't miss out too much while speaking. No, ma'am, just dividing the cash flows and what cash flows is for a stock. Okay, okay, so let's simplify it further. Let's move from the start. When a shareholder or when an investor is purchasing a share, he or she is looking for two types of returns. One is a dividend return and the other is a capital appreciation. So a dividend return again, shares which are paying regular dividends, they are taken to be a good investment opportunity for the shareholder.
for the investor basically. And then once you have purchased the share, you are expecting an appreciation in the price of the share. That is, tomorrow when you sell the share, you should fetch an amount which is higher than the purchase price. These two values or these two terms are then used to calculate the fair price, the intrinsic price of the share. अब इसका क्या मतलब है? Today, when you are looking at any stock in the market, say for example, let's pick up Tata Steel. Now, when I shortlist, okay, I have say rupees 20,000 to spare, and I am planning to invest this amount in shares. So I shortlist, okay, let's go for the metal sector, and metal sector may be iron and steel. May I want to go for the top notch company, Tata Steel. Now, at my point of planning to enter into market, I will now go into analysis. Obviously, different people have different ways of entering the market, but you being finance students should have some knowledge which is more than a layman. So you go for some past, looking at some past trends in the company, say what has been the earnings of the company, और अगर past price movements देख रहे हैं हम शेयर की, तो हम ये देखेंगे कि ओके कितना अप्रिसिएशन हुआ है शेयर में, कितनी ग्रोथ ईयर बाय ईयर कितनी ग्रोथ हुई है, पास्ट 6 मंथ्स में कितनी ग्रोथ हुई है, या लास्ट 1 वीक में क्या प्राइस मूवमेंट रहा है. So all this homework is done. Uh, a step higher term which we use is that we are doing some fundamental analysis and some technical analysis. So technical analysis का तो हमारा एक alumni session भी हुआ था. So technical analysis is you are looking at the past price movements, you're charting the price movements and then trying to predict the future. Fundamental analysis, very relevant, very important. जो भी आप अभी स्टडी कर रहे हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, आप कंपनी के फंडामेंटल्स को क्रिएट कर रहे हो थ्रू द डिसीजंस दैट यू आर टेकिंग. तो व्हेन आई से ओके डेट इक्विटी रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट हो कितना इक्विटी हो, वो ना सिर्फ प्रॉफिट्स इम्पैक्ट कर रहा है कंपनी के, पर अगर वो कंपनी एक पब्लिक कंपनी है तो उसके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को भी इम्पैक्ट कर रहा है. सो एवरीथिंग इज रिलेटेड. योर अकाउंटिंग एंट्रीज टुडे will impact the price movements tomorrow. And then again, these accounting entries are a result to a large extent of the decisions we are taking here in financial management. Because today, what the debt equity proportion is will impact the profits that you earn in the future, which will then impact the price of the share in the future. So everything is related to each other. Now coming back to the scenario where I am planning to purchase share of Tata Steel, I will also look into the fundamentals of the company. फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी मीन्स कि जो भी परफॉर्मेंस रही है, जिस भी सेक्टर में कंपनी परफॉर्म कर रही है, बेसिक कंपनी की रेशियोज क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, लिक्विडिटी रेशियो क्या है, ये सब आप देखते हो. अब उस बेसिस पे हम कोशिश करते हैं कि हम रियल वर्थ कैलकुलेट करें अपनी इन्वेस्टमेंट की, अपनी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट की. उसको हम फाइनेंशियल टर्म्स में बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू.
Now, this calculated intrinsic value is then compared with the market price. तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो आपने आपके पास जो डेटा है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करी, और अब आप उस शेयर की जो भी आपका कंसिडरेशन में शेयर है उसकी वैल्यू आप मार्केट प्राइस से कंपेयर करोगे। अगर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा आती है मार्केट प्राइस से, देन व्हाट विल यू डू? एनीवन, एनी गेस? Can you repeat your last sentence? The price of? The I calculate the intrinsic value of Tata Steel. ओके, Yes, ma'am. एंड आई फाइंड कि ओके, ये मार्केट प्राइस से ज्यादा आ रही है जो मैंने कैलकुलेशन करी हुई है। आई एम श्योर ऑफ दैट कैलकुलेशन, एंड से आई फाइंड कि जो अभी मार्केट प्राइस है टाटा स्टील का वो इससे कम है। तो टाटा स्टील इज रफली Yes, ma'am. अराउंड You'll थर्टीन buy the stock. हंड्रेड या 1320 के करीब है। So yes, absolutely right. Very good. My intrinsic value is coming out to be 1500, कि आज की डेट में स्टॉक की वैल्यू कम से कम 1500 होनी चाहिए, जबकि आज की डेट में टाटा स्टील की जो मार्केट प्राइस है दैट इज 1321। I will buy the share because in the long run I expect that the share will realize its intrinsic value. Opposite case will lead to a recommendation of selling the share. Okay. Now, how am I calculating this intrinsic value? I am discounting the expected cash flows. My expected cash flows are in form of dividend and say the मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो अभी 2 इयर्स का मैंने टाइम फ्रेम लिया और मैं इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती हूँ टाटा स्टील की। सो आई विल डिस्काउंट द एक्सपेक्टेड डिविडेंड and the expected market price at the end of the second year, because my period of holding or investment period is 2 years। तो अब वॉल्टर मॉडल क्या कहता है? वॉल्टर मॉडल कहता है कि जो डिविडेंड पे आउट का नेचर है फर्म का, दैट विल इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ डिस्काउंट। तो आप डिनोमिनेटर में आई देख रहे हो, दैट इज द डिस्काउंट रेट। तो अगेन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, अगर डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? इफ आई Some इज, com- हाँ, हाँ, एब्सोल्युटली राइट। तो इफ आई इज इंक्रीज, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया, तो ओवरऑल जो आपकी टर्म आएगी वो कम हो जाएगी, तो आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो Walter says that if a company regularly distributes dividend, the shareholder will discount the future expected cash flows at a lower discount rate and hence give a higher value to the firm. That is what is relevance of dividends. Again, to explain this relevance further, Walter has created three conditions, given us three scenarios. Growth firm है, investment opportunities है, dividend कम दो, retain ज्यादा करो। इसके एक्सट्रीम एंड पे अगर आपकी डिक्लाइनिंग फर्म है, आगे कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छे नहीं दिख रहे, तो ऐसे केस में आप डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करो, रिटेन कम करो। बिकॉज
each decision with respect to dividend taken today will impact the price of the share. Okay, so let's ओके see. मैम। Yeah, Pranat. इंट्रिंसिक वैल्यू को हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू को पी रेशियो से, मैम पीबी रेशियो, यस, बुक वैल्यू। पीबी रेशियो बेटा। अब मैं अगर डिटेल में जाऊंगी तो एक्चुअली ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट चला जाएगा, पर हर रेशियो के लिमिटेशंस होते हैं। ओके, ओके मैम। जो आप रेशियोज इन क्वेश्चन बोल रहे हो, ये सब जो रेशियोज है, पी रेशियो हम बोलते हैं, पीबी रेशियो बोलते हैं, इन सबके यस बेनिफिट्स हैं, बिकॉज पीबी रेशियो इटसेल्फ इज एन इम्प्रोवाइज्ड रेशियो, द प्राइस टू बुक रेशियो। तो ये मार्केट वैल्यूएशन और बुक वैल्यू में बताती है कि क्या रिलेशन है, कितना टाइम्स है, और जितना ज्यादा टाइम्स होगा उतना बेटर है, इफ आई एम करेक्ट द एक्सप्लेनेशन। So it is a good ratio, but then a single ratio should never be used in totality. जब आप पीबी रेशियो यूज करो तो उसके साथ और भी रेशियोज को चेक करो, देन टेक अ डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू what should be the intrinsic value of the share and whether it is a good buy or not. मैम इंट्रिंसिक वैल्यू वैल्यू नहीं होती जो बुक के अंदर स्टोर हो रही है। नहीं नहीं नहीं, बुक वैल्यू तो वो हो गई जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से आई। यस मैम। ठीक है, हाँ, जो आपकी आपने जो भी नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करी, टोटल एसेट्स में से इंटेंजिबल एसेट्स माइनस कर लिए, जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो फ्यूचर फोरकास्ट से भी इम्पैक्ट हो रही है। अब जो यहाँ पे मैंने D1 या D2 लिखा है, ये dividend expected at the end of year 1, dividend expected at the end of year 2, तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज नॉट ओनली द बुक वैल्यू बट द फ्यूचर एक्सपेक्टेड, जो भी हमारी expectations have with respect to the main fundamentals of the firm, they are being discounted here. ओके मैम। Okay, so मैम this एक is बार ये both आई वाला it. पार्ट रिपीट कर देना, डिस्काउंट रेट वाला। क्या प्रणत, आई डेंट गेट यू। मैम स्मॉल आई जो डिस्काउंट रेट वाला पार्ट बताया था ना आपने, हाँ जी, डिस्काउंट रेट एक बार रिपीट कर दीजिएगा ये वाला। ये कि आप डिनोमिनेट, आपके पास एक टर्म है, एक फ्रैक्शन है, D1/1 + I raised to the power 1। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप D1 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, जो फर्स्ट टर्म है, मैं अभी सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, यस मैम। ये आपका डिस्काउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट आया। अब मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप डिस्काउंटिंग हायर डिस्काउंट रेट पे कर रहे हो, 10% पे डिस्काउंट करना और 5% पे डिस्काउंट करना, सेम वैल्यू को, 100 रुपए के कैश फ्लो को 5% पे डिस्काउंट कर रहे हो और 100 रुपए के कैश फ्लो को 10% पे डिस्काउंट कर रहे हो, किसमें आपका आंसर ज्यादा आएगा? 5 वाले में अमाउंट ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जी। तो अंडर द वॉल्टर मॉडल, if a company is paying dividends regularly, the shareholder will discount these future dividends at a lower discount rate। और अगर वो होता है तो वैल्यू फर्म की शेयर की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके मैम। Okay, so this is how Walter is trying to explain the relevance of the dividend decision, that it will impact the value of the share, and hence the shareholders they consider this fundamental there, and the firm should also consider it. Just give me a second, I'll be back. By that time, just have a look at the question.
Okay, so let's get back to the Walton model. डिविडेंड रेलेवेंस का मैंने आपको पर से कॉमन एक्सप्लेनेशन समझा दिया. ये एक्सप्लेनेशन वॉल्टर मॉडल में भी वर्क करती है एंड दिस वर्क्स अंडर द गॉर्डन मॉडल विच इज द सेकेंड रेलेवेंस मॉडल we'll be covering. Now, Walter has given this formula for calculating the market price of the share. D stands for the dividend per share paid by the firm. Now, this is a dividend already paid by the firm. R, small r, is the ROI, return on investment earned by the firm. E is the earning per share, and KE is the cost of equity. So what we assume is that we have an all equity firm and the cost of capital is KE. So what we'll do, we'll start solving the question, and then with the conclusion, I will further explain the recommendations of the Walter model as covered in the last class. So we have earnings per share of SR Limited is rupees 20. So this is your EPS, rupees 20 per share. The cost of equity is 20%. Find out the market price of the share under different rates of return 25, 20, and 15, and for different dividend payout ratios. Now you have the rate of return. So I write it like this. Rate of return is basically R. So at 15%, 20%, and 25%. And then again, you have different dividend payout ratios starting with 0%, 30%, 70%, and 100%. So you have different cells before you, and you can see that basically you have 12 conditions before you, 3 with the different rate of return for the firm and 4 dividend payout ratio. Before you start solving, you can see that in first case R is less than KE. R is 15%, KE is 20%. In the second case, R, that is the return on investment by the firm, is equal to KE. And in the third case, return on investment by the firm is greater than KE. So I'll take up one case. You have to apply this formula 12 times. I will take up one case of, okay, I'll start with this case, 100% dividend payout ratio. 100% dividend payout ratio means firm ने 20 rupees earn करा और firm ने 20 ही rupees शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% होगी तो 0 रुपीज होगा डिविडेंड.
When dividend payout ratio is 30%, it means 6 rupees out of this 20 has been distributed as dividend. D will be 6, and again similarly when dividend payout ratio is 70%, it means D, the amount of dividend is rupees 14. So okay, coming to the last part which I am solving, or even better, I'll take up the 70% thing क्योंकि इसमें टर्म जीरो नहीं होगी. So my dividend will be 14 rupees. Okay, till here, till this point, if you have a question, you can ask. Okay, so I start putting the values in the formula. Simply price of the share. My D is 14. Return on investment, I'm solving for this cell. So my return on investment is 0.15. My cost of equity is 0.20. Earnings per share 20 rupees. 20 minus 14 dividend per share and 0.20. So when I put in the values here in the formula, my answer will come out to be, just check the calculations at your end also. Better I write it here. So my price is coming out to be 92.5 rupees. 92.5. Okay, so this is one case. You start solving for the remaining 11 cases. ऐसे ही आपने हर बारी फॉर्मूला में वैल्यू चेंज करनी है. Start solving. Take 10 minutes. I'll discuss the answers. We'll fill in the values and give a proper conclusion to the solution.
So every one of you solve because I'll ask each one of you for the answers.
Okay, let's start discussing the answers. So we'll start with the 0% dividend payout ratio. So we'll start with Tanya. Give me the answer for the first cell. Very nice. Nancy, you start with 0%. Am I audible, Nancy? Not audible. Tanya, Pranat, please start with 0% at 15. 75 rupees. Okay, so this is 75, 100 and 125. 100, and then 125. okay, 125. Then next, Gaurav, have you solved? Gaurav, Ayan, anyone who Yes, solved? Okay, Gaurav, we'll start with you. 30% वाली रो बताओ आप मुझे. Ma'am, 82.5, 100 and 117.5. Very good. 82.5, 100 and 117.5. Okay, then we come to 70%. Aman, Aman Muyal, first you yeah. answer. Ayan, यस मैम. अयान आप बताओ 92.5 के बाद. मैम 100. ठीक है बेटा, और फिर मैम उसके बाद मैम कर रहा हूँ सॉल्व अभी. अच्छा अभी आप कर लो. टिल दैट टाइम आई विल राइट द लास्ट रो. अमन झा, Yes, ma'am. 100 on 70th का last point. नहीं 100% का. Okay, ma'am. Ma'am 100 का तो मैम सारा 100 ही आ रहा है. सारा 100 आ रहा है. ठीक है. So you can tell me this last cell also. What is the value coming to? Ma'am 107.5. 107.5. Okay. So once all of you complete, this is how the solution will look like. Now in this case, we'll start making conclusion for the solution. You see, Walter says there are three types of firms. One is a growth firm, not visible. So one is a growth firm, one is a normal firm, and one is a declining firm. So in your question, you were given all the three firms. So for me, I have all the three cases before me. The declining firm is where the return on investment earned by the firm is lower than the cost of equity. Normal firm is where the return on investment is equal to the cost of equity. And growth firm is when return on investment is higher than the cost of equity. Now, coming to the recommendations by Walter, we say that for a growth firm, I'm starting from here, the first case. For a growth firm, it is best to retain and distribute less because a growth firm has investment opportunities before it, and the ideal dividend payout ratio is 0%, which you can clearly see is the dividend payout ratio at which you are getting the highest market price for the share. Opposite to this, declining firm, return on investment 15%, cost of equity 20%. It is best for this firm
to go for 100% dividend payout ratio, because at this point it will have the highest market price of the share. So ideal dividend payout ratio for a declining firm is 100%. And lastly, the normal firm, whatever be the dividend payout ratio, value of the share remains the same. So your middle column is showing you that irrespective of the dividend payout ratio, the market price of the share remains same at 100 rupees. I hope all these parts with conclusion are clear. Yes, ma'am. Any question, any doubt you can raise.